So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss, I hope you all are aware that every Sunday at 8 p.m. we are having the static GK discussion. We are going to discuss. So today also we will discuss from the place where we had left. So in the last class, we were discussing this question, right? So am I audible, visible? Is everything fine? If yes, then please write yes in the comments. Am I audible, visible? Yes. So basically, I was talking about this in the last class. Who was the president of India when the national emergency was invoked from 1975 to 1977? And what was the answer? Please tell me. What was the answer to this question? Because in the last class, this was the last question I was discussing. Second. Yes. So the answer was Fakhruddin Ali Ahmed. We had discussed. Yes. A is the right answer. Yes. Good evening, Adrija. Welcome to the class. I think I'm audible, visible. Everything is fine. Yes. Fine. So we were discussing this. अच्छा एक चीज बताओ. I'm discussing it because on which date emergency was invoked? Because date पर question आया है in CLAT 2021. They had asked about dates. ठीक है, दो जगह dates पूछा था. I'll tell you the dates that were asked. पहले आप ये question बताओ, फिर मैं बताऊंगा किस तरह का dates पूछा गया पहले भी. हाँ, yes, 25th June, right. 25th June 1975. Why I'm telling you? Because if you add 50 years, it becomes 25th June 2025. Okay. Yes. Adrija, Ishita, you all are right? Is the right answer to this question. Okay. Fakhruddin Ali Ahmed was the president of India during the emergency from 1975 to 77. Okay. A is the right answer to this question. Now, I'll ask two questions which were asked in CLAT 2021 based on date. So, पहला date पूछा था UDHR, Universal Declaration of Human Rights, was signed on which date? और exact date पूछा था. They gave 4 options and they were very near to each other. बताइए date. Universal Declaration of Human Rights. बताइए. Please tell me. Which date? कौन से डेट को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट साइन हुआ था? एग्जैक्ट डेट विथ एग्जैक्ट ईयर. सो द ऑप्शंस वेयर, जो 4 ऑप्शंस दिए थे वही बता देता हूं. इस तरह था. एक था 10 सितंबर 1948, एक था 10 दिसंबर 1948, ऐसे ही था. एक था 10 सितंबर 1949, एक था 10 दिसंबर 1948. लाइक दिस. इस तरह का ऑप्शन था. यस, 10 दिसंबर 1948. यस, अदीजा एंड इशिता वाश ने राइट. हाँ, 10 दिसंबर 1948 ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ठीक है, ये पूछा था क्लैट 2021 में. नेक्स्ट ईयर एलेट में क्वेश्चन क्या आया था? ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड व्हेन? क्या होगा आंसर? पीपल से कि पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होता, रिपीट नहीं होता है. देखो सामने आपके पीवाईक्यूज गेट्स रिपीटेड समटाइम्स. यस. नेक्स्ट ईयर एलेट आस्क्ड ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड व्हेन? यही तो है. लोग बोलते हैं पीवाईक्यू रिपीट नहीं होता. देख लो, रिपीट हो गया. ओके, आई विल शो यू. एलेट तो बहुत जगह से रिपीट करता है क्वेश्चन. ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर. कहां चला गया? हाँ. नाउ एक और जो क्लैट 2021 में डेट बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, एक ये पूछा था गलवान वैली क्लैश का डेट पूछा था. ठीक है, वो उस टाइम पर हुआ था जून 2020 में. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द डेट. 11 या 16 जून के आसपास समथिंग हुआ था. तो ये उस टाइम पर, बिकॉज 1 ईयर बैक देयर वाज गलवान वैली क्लैश. ओके. एक और जो एग्जैक्ट डेट पूछा था वो पूछा था शेख मुजीबुर रहमान असैसिनेशन डेट. असैसिनेशन डेट ये पूछा था. एग्जैक्ट डेट. एग्जैक्ट डेट मतलब आपको डे, मंथ और ईयर सब याद होना चाहिए, तभी आप आंसर कर सकते थे. व्हाट वाज दैट? एनीवन? यस, 15th August 1975.
अगेन इट इज इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है? 50 ऐड करो. 15th August 2025. Recently it was in the news. Yes, Adrija Shreyas Reddy, CLAT aspirant, you are right. ठीक है. Let's move on further to the next one. When was the 44th Amendment enacted, and who was the which political party was ruling at that time? बताइए. 44th Amendment. Read it carefully. 44th Amendment we are talking. Yes, Ishita and Shreya, you both are right. 1978, but it is not Indira Gandhi. Someone else was there. जनता पार्टी गवर्नमेंट थी. ठीक है. मोरारजी देसाई एंड ऑल. ठीक है. And please tell me, yes, Aditya, you're also right. Please tell me there was some amendment that were done in fundamental rights. वो क्या था? कुछ अमेंडमेंट किए गए थे फंडामेंटल राइट्स में 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद. वो क्या था बताइए. What was that? Yes, Gayatri Mahajan, you're right. Actually, right to property was earlier a fundamental right under Article 19(1)(f, है ना. 19(1)(f) 131 में कहीं पे था, है ना. So it was moved to Article 300 capital A, which became a constitutional right or a legal right. Yes, Ishita, Adrija, Gayatri Mahajan, you are right. FR greater than DPSP, वो उतना सही नहीं एक्चुअली. ठीक है. उस पर तो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए, चंपक दोराई राजन केस एंड मेनी अदर केस. ठीक है. खैर, okay. And 44th Amendment actually tried to reverse many of the things done in 42nd Amendment. Because 42nd Amendment during the emergency gave a lot of powers to the government, so which was reduced by 44th Amendment. Now the next is the impeachment of the president can be initiated in. And please tell me the article which talks about this. प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कहां शुरू हो सकता है? And please tell me till now how many presidents have been impeached or has been. Depends upon singular, plural, etc. इम्पीचमेंट अगर प्रेसिडेंट का होना है, यानी रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट कहते हैं. कौन से आर्टिकल से होता है, कहां शुरू होता है? आर्टिकल 61. ग्रेट अद्रिजा. हाँ, ये जो आर्टिकल 61, ये क्वेश्चन कहा था जब क्लैट 2020 में पैटर्न चेंज किया था क्लैट ने फर्स्ट टाइम, राइट. तो जब पहला सैंपल पेपर निकाला था, फर्स्ट सैंपल पेपर, देखो ये भी हमको याद है. उस सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन था और ये यही था, और वो डोनाल्ड ट्रंप के इम्पीचमेंट से रिलेटेड था वो पैसेज, और उसमें मेंशन था कि इंडिया में इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल में होता है. दिस मच आई रिमेंबर. ठीक है. खैर, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. यस, सी इज द राइट आंसर. दोनों में से किसी भी हाउस से इनिशिएट हो सकता है प्रोसेस. इट कैन बी फ्रॉम लोकसभा और फ्रॉम राज्यसभा. ठीक है. एंड हाउ मेनी प्रेसिडेंट्स हैव बीन इम्पीच्ड? नो वन इज इम्पीच्ड. Aditya is saying किसी को भी नहीं रिमूव किया गया. नहीं, किसी को भी नहीं. Yes. So not a single president has been impeached. Not a single Supreme Court judge or a High Court judge has been removed. वो अलग बात है कि कुछ केसेस में हाई कोर्ट जज ने रिजाइन कर दिया जब उनका रिमूवल प्रोसेस शुरू हुआ था. ठीक है. So till now, not a single Supreme Court or High Court judge has been removed by the Parliament. Not a single president has been impeached. So C is the right answer. और देखो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल क्या लिखा होता है? ओके. सो रिमूवल के लिए वर्ड लिखा होता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, राइट. दिस वर्ड इज मेंशन. और इनकैपेसिटी आर्टिकल 124 क्लॉज 4 टॉक्स अबाउट दिस, है ना. उसे पढ़िएगा तो लिखा होगा प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. प्रेसिडेंट के लिए जो वर्ड है इंपीचमेंट का कारण क्या, किस रीजन से किया सकता है? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बस इतना लिखा है. व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इंपीचमेंट? शेयर्स दैट विल बी अ लॉन्ग स्टेटमेंट, बट चलो मैं बताता हूं. लोकसभा और राज्यसभा, आइदर ऑफ द टू कैन इनिशिएट.
ठीक है. So the if the Lok Sabha passes the bill by 2/3 of total strength of the house, total strength नहीं 543 का 2/3, so निकालोगे तो आएगा 362, है ना? सही निकाल रहे हैं ना? यस, 181 to 2. हाँ. Similarly, राज्यसभा का 2/3 of the total strength of the house से फिर पास किया जाएगा. 2/3 will be 245, है ना? निकालो 81, 162, 163 के आसपास आएगा. 3 हाँ, ठीक है. So you need to pass from Lok Sabha and Rajya Sabha both 362 and 163. 2/3 of the total strength से पास होगा, then only the president is impeached. ठीक है. और इसमें यह भी लिखा है कि if let's say it starts from Lok Sabha, then the other house, that is the Rajya Sabha, will conduct an inquiry. Or if the Rajya Sabha initiates, the other house will conduct an inquiry. बस इतना लिखा है. What is the meaning? It has not been explained further. ठीक है. And removal of a judge we have discussed. तो आप जाना YouTube पे सर्च करना removal of SC judge career launcher, ऐसे YouTube पे वीडियो मिल जाएगा. ठीक है. या आप सर्च करना removal of justice यशवंत वर्मा, again you will get the video. ठीक है. career launcher करके सर्च करना, you will get that. Let's move on. या career launcher law entrance पूरा लिखना, right, completely, you will get that. Yes, Shreyash, you are asking sir, special majority is 2/3. देखो अभी यहीं भी कंफ्यूजन होता है. स्पेशल मेजोरिटी जो होता है ना, 2-3 तरह की होती है. फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड. जो प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट होता है वो 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस होता है. इसको कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी ऑफ थर्ड काइंड फॉर प्रेसिडेंट. रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज जो होता है, दैट इज डन अंडर स्पेशल मेजोरिटी ऑफ सेकंड काइंड. दिस इज 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड हाफ ऑफ टोटल. ये चाहिए होता है. ठीक है. So yes, removal of a Supreme Court judge also requires special majority. Impeachment of president also requires special majority, but both the special majority are not the same. ठीक है. एक special majority of first kind भी होता है, हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे. So yes, in both the cases, in president impeachment, a special majority is required. In removal of a Supreme Court judge, a special majority is required, but both the special majorities are different. ठीक है. Majority बहुत तरह की होती है, मैं बताता हूं. एब्सोल्यूट मेजोरिटी, फंक्शनल मेजोरिटी, या जिसको सिंपल मेजोरिटी कहते हैं, देन इफेक्टिव मेजोरिटी, ओके, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड. ठीक है. बहुत तरह की मेजोरिटी होती है. सो इफ आई कीप ऑन डिस्कसिंग इट, तो यू विल कीप ऑन कंफ्यूज्ड फर्दर. तो जितना ज्यादा बताएंगे उतना आप कंफ्यूज कर जाओगे, तो इतना काफी है. ठीक है. दैट्स मोर देन इनफ. आई होप इट इज क्लियर. यस और नो? Is it clear? Or should I explain? ठीक है. इतना काफी है. आप रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज सर्च करना ना, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है. एक यूट्यूब पे वीडियो है, उसमें ये सर्च करना, उसमें आपको पूरा डिटेल मिलेगा. रिमूवल ऑफ SC जज कैरियर लॉन्चर लॉ एंट्रेंस, ऐसे सर्च करना. उसमें थंबनेल में बड़ा सा लिखा होगा रिमूवल ऑफ SC जज. ये वीडियो सर्च करना पूरा, इसको जाके यूट्यूब पे सर्च करना. Okay, search this on YouTube. You will get a video where I have explained the removal of a Supreme Court judge and compare it with the president impeachment. वहां पे मैंने प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट से उसको कंपेयर किया है. ठीक है. तो वो देख लीजिएगा, और ऐसे भी अभी रिमूवल वगैरह न्यूज में. So you will get to know, and that will be very helpful. ठीक है. Let's move on. Which among the following amendments to the Constitution designated Delhi as NCT Delhi, National Capital Territory? और उसके बाद now we are having the chief ministers as well as lieutenant governor. तो CM का पोस्ट आने लगा 1990 से ना. So which amendment brought this? Yes, Adrija, Shraddhi, you all right. 69th amendment. B is the right answer. Gyan, you all are right. हाँ. ठीक है. 1990s. उसके बाद now we are having a concept of national capital territory. We have Delhi, chief ministers in Delhi, है ना. और अच्छा, कौन से आर्टिकल, which article governs Delhi? There is one specific article for the Indian Constitution which governs the Delhi. वो कौन से आर्टिकल है?
ग्रेट आशिम आशीर्वाद, वेरी गुड. 239 AA. इस पर काफी लड़ाई झगड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में. A lot of petitions. We have seen a lot of judgments and frictions under 239 AA earlier. ठीक है. Yes, Adija, you're also right. Good. Okay, let's move on. Which among the following schedules of the Indian language mentions 22 languages? And please tell me how many languages were there originally? Originally, matlab when the constitution was formed. Yes, Ashim, Ishita, Adrija, you are right. 8 schedule. Originally कितनी languages थी इसमें? 14 लैंग्वेज. ग्रेट. हाँ, 14 थी, अब 22 हो गई. अच्छा, what is the idea behind these 22 languages? Are they official language, national language, scheduled language, or none of the above? Which word should I be using? मैंने पेड क्लास में ही बताया था ये. I still remember, I think. इसको नोटा मत कर, all of the above कर देते हैं. All of the above. D को I have changed it to all of the above. What should be the answer? I have taught those who are my paid batch student. At least वो तो बता दे, उनको मैंने बताया भी था. अच्छा, people are saying official language. यानी सारी 22 लैंग्वेज जो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है, all 22 are official languages. Are you sure? Where it is written? Is it written in 8 schedule that these are official language? कहीं पे लिखा हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Conceptual clarity is very important. Otherwise, you will get confused. I have seen many substandard books mentioning 8 schedule languages are official language. Shreyas, you are partially correct. Again, you are also confused. First of all, there is no national language in India. Official language, according to Article 343, is Hindi. And along with अगर official language act भी include कर लो, then it is English. ठीक है? Someone is asking how to cover backlogs. Kogu is asking, please go to the playlist. Someone is asking about how to cover backlogs. Go to the playlist. I have made 2 playlist. एक में I have discussed all the weekly current affairs. Dark blue कलर का thumbnail होगा. इसमें I have discussed January part 1, 2, 3, 4. Similarly, February part 1, 2, 3, 4. I have discussed all the current affairs since January. और एक monthly current affairs होगा, वो भी blue कलर का thumbnail होगा. That is also taken by me. तो दोनों में से कोई एक भी देख लो. If you watch both, that's fine. In this way, you can cover the backlogs. ठीक है? So we are talking about national language. National language नहीं, official language technically is Hindi. Plus you can say English also. ये 8 शेड्यूल की जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं है. हाँ, बट इफ यू आर रीडिंग सब स्टैंडर्ड बुक्स, आई हैव सीन मेनी सब स्टैंडर्ड बुक्स मेंशनिंग दीज आर ऑफिशियल लैंग्वेज. कहां लिखा हुआ है ऐसा? सो रीड 344 एंड 351, राइट? जाके पढ़िए, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि दीज आर ऑफिशियल लैंग्वेज. रादर यू शुड रीड 343. इट सेज दैट हिंदी इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. ओके. प्लस if you read official language act, it says it has talked about English as well. So technically Hindi and English is an official language. There is no national language and these are not official language. ठीक है? You have to be very crystal clear. सिर्फ यहाँ पर हिंदी है, ये official language. तो फिर इसको कहा क्या जाए? You can call it as Indian origin language या Indian languages or scheduled languages. These are the words you should be knowing. These are not official language. सिर्फ यहाँ पर हिंदी official language है और इंग्लिश तो इसमें है भी नहीं. Okay, why don't we find English here? ये बताओ, इसमें इंग्लिश क्यों नहीं है? इसका आंसर मैंने थोड़ा देर पहले दिया था. Why is English not there? Please tell me.
Yes, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया, these are Indian languages और Indian origin language, ठीक है, and it is not actually, so of course अंग्रेजी तो आता नहीं उसमें, that is why English is not there. अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, when I'm saying Indian language, you should consider it as Indian subcontinent. देखो मैं थोड़ा सा आपको मैप से बताता हूँ, let me add the map so that you will understand. Just hold on for a second. Yes, अब देखो, एक यहाँ पे गौर से देखना, अब आप देखोगे कहां चला गया, सिंधी कहां है, यू आर सेइंग सर सिंधी, सिंध इज अ स्टेट इन पाकिस्तान, राइट, एंड यू आर सेइंग इट्स एन इंडियन ओरिजिन लैंग्वेज. नाउ सिमिलरली इफ यू विल सी नेपाली कहीं पे होगा, नेपाली इट्स इन नेपाल, इट्स नॉट इन इंडिया. इसको मैं क्लैरिफाई कर देता हूं सो यू विल अंडरस्टैंड इट इजीली. देखो आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर, इंडिया जो होता है ना एज अ कल्चरली इंडियन सब कॉन्टिनेंट समझाता था ना, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर. So for many years it was one country and culturally also. So when I'm saying Indian origin languages, we are not talking after 1947 because origin तो बहुत पहले हुआ था ना. When I'm saying Hindi, तो हिंदी क्या 1947 के बाद originate हुआ है? No. So of course the entire, तो आपको पूरा Indian subcontinent के context में देखना होगा. So Sindh is here in Pakistan. Of course, you will find a lot of Sindhis in India. Similarly, Nepal, of course, a part of Indian subcontinent. So Nepali can also be considered here. ठीक है, concept समझना, इसलिए why I'm telling you these things. Because if in exam they ask you a question, which of the following is not mentioned in 8th schedule, तो आप रटोगे क्या पूरा? Will you remember all those 22 languages? It's not possible. But I have seen sometimes questions being asked like that. इन चारों में से मैंने देखा किसी किसी एग्जाम में से पूछते हैं, पीवाईक्यूज में बहुत सारे देखता हूं कि इसमें से कौन जो है, तो अगर इंग्लिश लिखा होगा तो आप एलिमिनेट कर देना कि हाँ इंग्लिश तो इंडियन लैंग्वेज नहीं है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. अब एक दो और सवाल पूछता हूं, इसमें से कौन मेंशन नहीं है? which is not mentioned. Nota means none of the above. Which of the following is not mentioned in the 8th schedule? Bodo, option A. B is Maithili, option C is Urdu, option D is Malayalam, option E is Nota. Let me see. And इसमें again रटना नहीं है. You don't have to rote learn. You should learn. That's why I'm teaching you as with the common sense. Polity actually, to a large extent, is common sense based. तो इसको रटना नहीं होता है, बहुत हद तक बहुत सारी चीजें टू लार्ज एक्सटेंट 70-80% कॉमन सेंस से होता है. हाँ देखो, अगेन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओरिजिन लैंग्वेज. Now Bodo is actually in Bodo land is there in Assam. ठीक है. Maithili is a very famous place. Maithili in Bihar. Those who are from Bihar, they must be knowing Maithili language. उर्दू पे मैं आता हूं. Malayalam is in Kerala. I am sure you must be aware. ठीक है. Urdu actually is a language. It is actually a language which is born in India, not somewhere else. ठीक है. ओरिजिनली कहा जाता शायद वेस्ट यूपी के आसपास समवेयर यहां से निकली थी उर्दू. Okay, it is not born in Arab or some other place. If the option is mentioning Arabic, then you can say it is from Arab. If the option says Persian, then it is from Iran or Afghanistan region. So Persian जो इंडिया की लैंग्वेज नहीं, इंडियन ओरिजिन लैंग्वेज नहीं है. It's actually from Iran and Afghanistan. Arabic is also not an Indian origin language, but Urdu is an Indian origin language. Okay, why? Because Urdu actually was formed as a result of the mixture of Hindi, English, Persian, Arabic, Urdu, many other languages. Sir, can you give an example where a language is not recognized under that list? Yes, English. Because if the option says, if they have given 4 options and one of the option is English
and they are asking which of the following is not mentioned in 8th schedule, then you have to mark English because it is a foreign origin language. Or let's say Persian is written. Persian is mostly from Iran. Persia Iran का old name था. ठीक है? You have to be very careful in this. ठीक है? तो 2-3 बार पढ़ लोगे तो एक रफ आइडिया लग जाएगा. And you'll get an idea. Assamese, Bengalis, of course, Indian, Hindi is there, Gujarati is there, Kannada, Kashmiris, Konkani. ठीक है? You'll get an idea about it. Of course, रटना possible नहीं है. That's why मैंने सिंधी के लिए भी एग्जांपल दे दिया because some people will think कि सिंध तो स्टेट इंडिया में है नहीं. Then how can it be the answer? ठीक है? So you have to think in that context and then solve the answer. Is it clear? आपको ये concept clear हुआ? I hope the concept is clear. है ना? फिर I had discussed about the states official languages which are Hindi and English. ठीक है? Let's move on to the next question. Which among the following schedules of the Indian Constitution mentions the 3 list? पहले बताओ ये इसका आंसर, फिर एक और इससे क्वेश्चन पूछूंगा. Yes, Ashim, Adrija, Ishita. Shreyash is confused. Yes, the right answer is 7th schedule. ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. So 7th schedule talks about 3 lists: union list, state list, and what is the third one? Concurrent list. Where both parliament and the state legislature can make laws. है ना? अब देखो, this idea was borrowed from where? कहां से लिया गया था? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट का आइडिया. हाँ, रेसिडुअरी आइटम्स पर आ रहा हूं शेयर्स, वी आर कमिंग टू दैट. द आइडिया वाज बोरोड फ्रॉम वेयर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. अच्छा, अब यूट्यूब पे जाके सर्च करना बोरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उसमें मैंने एक सेपरेट क्लास लिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फिर टाइप कर देना करियर लॉन्चर लॉ एंट्रेंस, विल गेट दैट. वैसे आंसर आई हैवंट गॉट द राइट आंसर. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हो, बट देयर वाज अ पर्टिकुलर लॉ. गायत्री, यू कैन से पार्शियली यू आर राइट, बट आई वांट a more perfect answer. Government of India Act 1935. Yes, Ashim, great. So Government of India Act 1935 talked about it. Provincial list, federal list. ठीक है? इस पर ही मैंने सेपरेट क्लास लिखा है. इस पर सर्च करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 करियर लॉन्चर. यू विल गेट अ वीडियो इन बोथ एमबीए चैनल एंड इन लॉ एंट्रेंस चैनल. आई हैव मेड दिस वीडियो. ठीक है? अब देखो, इस पे से एक दो और क्वेश्चन बनेगा. जस्ट वेट. हाँ, कंकरेंट लिस्ट जनरली ऑस्ट्रेलिया से लिया है, बट ये 3 स्प्लिट करना इस तरह से लिस्ट में. This idea we have taken from Government of India Act 1935. Now I have one more question. Someone was talking about residuary list. तो देखो, technically residuary list कुछ होता नहीं है. It says कि if anything is not there in these 3, they are called as residuary subjects or residuary list, जो भी कह लो. So residuary subjects में किसका पावर होता है? Who has the power to make laws? Parliament or the state legislature or both? Yes, 3 लिस्ट पर वीडियो नहीं बनाया हूं क्लैट एस्पिरेंट. मैंने बोरोड फीचर्स पे बनाया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पे बनाया है. 3 लिस्ट पे नहीं बनाया, बट हाँ, शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बनाया हूं. ठीक है, आप ये करना क्योंकि आपको शेड्यूल्स पूछना है. यूट्यूब पे जाना, सर्च करना शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, और फिर लिखना करियर लॉन्चर लॉ एंट्रेंस. ऐसे सर्च करना, यू विल गेट दैट. I have explained all those 2 schedules. ठीक है? Yes, residuary subjects पर पार्लियामेंट के पास पावर होता है लॉ बनाने का. Yes. Similarly, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सेंट्रल, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट था. इसमें जो रेसिडुअरी सब्जेक्ट था, इसमें किसके पास पावर था लॉ बनाने का? Why I'm asking it? There is a reason. पहले आप इसका आंसर बताओ. I'll tell you the reason. Under Government of India Act 1935, who has power to make laws under residuary subject?
I had discussed in this class. You search Government of India Act 1935 career launcher law entrance, you will get the video. My video. How long is the class going to be? फिर 5-10 मिनट और 5 मिनट, ठीक है. रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में किसके पास पावर था लॉ बनाने का? सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? नो, सेक्रेटरी नॉट. देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम आस्किंग. मे बी दे कैन कम इन AILET. हो सकता है, या इवन क्लैट में भी आ सकता है, बिकॉज मॉडर्न इंडस्ट्री से दे आर आस्किंग क्वेश्चन. द आंसर इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. व्हाई आई एम आस्किंग, देखो होता क्या है. हाँ, वॉइस राइट आशिम, नाउ यू आर राइट. उस टाइम पार्लियामेंट नहीं होता था. व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आई हैव सीन इन मेनी स्टैंडर्ड गवर्नमेंट एग्जाम दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड. इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, okay, रेसिडुअरी सब्जेक्ट was controlled by, तो आंसर तो भाई गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय कह सकते हो. And why I'm saying, because I have seen sometimes question from government exam getting repeated in AILET. 2-3-4 बार मैंने अपनी आंख से देखा, तो इसीलिए I was discussing it, तो मैंने कहा चलो बताता हूँ. तो यूनियन लिस्ट आप जानते होगे है ना, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, करेंसी एक्सेट्रा. अच्छा ध्यान दीजिएगा, करेंसी वगैरह ये सब है ना. स्टेट लिस्ट, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट. एंड कंकरेंट लिस्ट, एजुकेशन, मैरिज, डिवोर्स, बैंक्रप्सी एंड सॉल्वेंसी. ठीक है, ये क्लियर है? नाउ आई हैव वन क्वेश्चन. प्लीज टेल मी हु कंट्रोल्स द दिल्ली पुलिस? डू यू प्रैक्टिस लॉ? नो. बताइए तो, हु कंट्रोल्स द दिल्ली पुलिस? व्हाट शुड बी द आंसर? Let me see whether you can answer it or not. Central Government of India. Yes. State list generally police के पास होता है. But we have told you, like for example, let's say Maharashtra. The state of Maharashtra, who will be controlling the police? The Chief Minister. Similarly in Tamil Nadu, the Chief Minister. But not in case of Delhi, because it is a union territory. So the Chief Minister does not have power when it comes to police. So it is controlled by whom? MHA, right? Ministry of Home Affairs is the ultimate, has the ultimate responsibility when it comes to Delhi police. And of course it works, and Lieutenant Governor actually works on the direction of that. So police is not in the hand of Chief Minister. Public order, police and land do not belong to actually the Chief Minister. Rather it is in the hand of the Lieutenant Governor, who is actually works on the advice of Home Ministry, because it is a union territory. तो यूनियन टेरिटरी मतलब यहां पर आ गया मामला. देखो अब आप बोलोगे सर यूनियन टेरिटरी आता कहां है? सर समवेयर इन द मिडल, कुछ इधर कुछ इधर. बट बाय डिफॉल्ट ऑल द पावर इज विद द यूनियन. ठीक है. सो ऑफ कोर्स यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन का ही पावर चलेगा. तो 3 चीज में तो चलता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज में यूनियन कैन अल्टर. ठीक है, यूनियन कैन reverse the decisions and all. So after all, because union territory is there, so center has more powers, especially when it comes to policing. तो policing में कोई scope नहीं होता है. Again, similarly, I have one more question. श्रेया शेट्टी, yes, यही तो फ्रिक्शन होता था. श्रेया शेट्टी, that was the question. इस पे बहुत सारे केसेस चले थे जब दिल्ली में हुआ था. So when there was opposite political party, yes, so Mr. Kejriwal was there. And here on the center there was BJP government, right? तो अब ये बोल रहे हो ना कि opposite parties होते हैं तो friction होता है. Yes, there are a lot of cases. वही सब मैं बता रहा था कि 239 capital A, we have seen a lot of cases regarding transfer of bureaucrats, transfer of DANIX officers. DANIX, who should be controlling it? ठीक है, तो इस पर split order भी आया था. जो DANIX वाला ट्रांसफर होता है, देखो मैं बताता हूँ. दिल्ली में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें जो ऑफिसर्स होते हैं, चाहे तो AGMUT, अरुणाचल, गोवा, मिजोरम, यूनियन टेरिटरी, AGMUT कैडर IAS होते हैं, AGMUT कैडर IPS होते हैं. तो पुलिस तो पूरी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी. ये क्लास 1. उसके नीचे एक होते हैं ग्रेड B गैजेटेड सर्विस, एक होता है DANIX ऑफिसर्स एंड DANIPS. तो अगेन पुलिस विल बी कंट्रोल्ड बाय सेंटर. लेकिन क्वेश्चन ये था कि जो क्लास A या ग्रुप B के सिविलियन ऑफिसर्स है, हु शुड बी कंट्रोलिंग इट? Whether the chief minister or the governor. So matter went to the Supreme Court and Supreme Court passed 1:1 order. उसके बाद matter was appealed in the 3 judge bench and I'm not sure कि अभी तक judgment आया कि नहीं.
ठीक है, तो अभी भी कंफ्यूजन था, बट ऑफ कोर्स फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस इट इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो यस, if there is a different political party, sometimes it creates friction. We have seen in the past. तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है whenever it's a union territory and the central government and the government which is ruling at the union territory level is different. ठीक है. अच्छा, similarly I have one question. Jammu Kashmir police currently will be controlled by हाँ, Shreyash, I will explain it first. Answer this question, then I will explain. पहले आप इसको आंसर कीजिए, फिर मैं बताऊंगा. Yes, you are right, Shreyas. When it comes to union territory, जितनी भी यूनियन टेरिटरी, all 8 union territories, police will be in the hand of center. Of course, no doubt. No role of the chief minister. मतलब वही कहने का मतलब है कि of course Ministry of Home Affairs and they will appoint a lieutenant governor or administrator. यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी, तो सारी यूनियन टेरिटरी में पुलिस तो श्योर शॉट सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगा. नो कंफ्यूजन एट ऑल. ठीक है, दैट हैज टू बी. व्हाई? बिकॉज इट इज अ यूनियन टेरिटरी. क्या मतलब हुआ? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पुलिसिंग ही होता है ना, और सेंट्रल गवर्नमेंट की वो टेरिटरी है. ठीक है. अब बोलो कि क्यों स्टेट उसको नहीं बनाया गया. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं आपको दिखाता हूं. Why has the government not made it a state? For example, अंडमान की बात कर लो. मान लो ये अंडमान निकोबार है. ठीक है, इसको आप बोलोगे सर वाई अंडमान एंड निकोबार इज इन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? बिकॉज इट इज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट. तो सारा पावर दिल्ली के कंट्रोल में होना चाहिए. सिमिलरली लक्षद्वीप, सिमिलरली दिल्ली. वाई दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी? द रीजन इज, अरे दिल्ली में इतना सारा पार्लियामेंट हाउस है, बिल्डिंग है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, एवरीथिंग इज देयर. All the army headquarters, everything is there in Delhi. So of course it has to be controlled by the center. That is the idea. ठीक है. फिर चंडीगढ़ क्यों बनाया गया, वो उसका रीजन है. We are not going in that detail. Similarly, Daman and Diu, Puducherry, why they have been made. But the idea is, the union territory means union's territory. So police will always be in the hand of the central government. Whether it's right now it's Jammu Kashmir. इसलिए Jammu Kashmir में why they are demanding a statehood? आपने देखा चीफ मिनिस्टर इज डिमांडिंग स्टेटहुड बिकॉज इफ द स्टेटहुड इज रिस्टोर्ड बैक, द चीफ मिनिस्टर विल गेट पुलिस पावर्स इंस्टेड ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर. समझ गए? जैसे अभी जम्मू कश्मीर है ना, सो देयर इज चीफ मिनिस्टर एंड देयर इज लेफ्टिनेंट गवर्नर. सो करेंटली पुलिस इनके हाथ में. पुलिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज इट इज अ यूनियन टेरिटरी. इफ इट गेट्स कन्वर्टेड बैक टू द स्टेट, द पुलिस विल गो इनटू द हैंड ऑफ चीफ मिनिस्टर. इज इट क्लियर? This is the reason why I'm sure you must be aware the